Hi everyone, welcome back to today's lesson. My name is Rekha Sharma. We are diving into a topic that often confuses English learners. The topic is defining and don't defining relative clauses. But don't worry, by the end of this lesson, you will not only understand the difference, but you will also be using them like a pro. So, let's get started. What are relative clauses? Let's have an overview. A relative clause gives more information about a noun. It's a way to give extra information about a person, place, or thing in a sentence. It starts with the words like who, which, that, whose, where, or when. See the example. The lady who is wearing black is my teacher. Who is wearing black? This is a relative clause because it tells us more about the lady. Easy enough, right? But here is the catch. Relative clauses come in two types. They give us essential information or non-essential information. So this example is giving us essential information, important information. कैसे आप पता लगाएंगे कि ये important है? अगर आप इस clause को remove करते हैं, if you remove this clause, the sentence will be the lady is my teacher. Which lady? That is not specific. So when we use this clause, the lady becomes specific. I am talking about the lady who is wearing black. She is my teacher. Okay? The second example, John who won the competition is happy. Who won the competition? Again, it's a relative clause. But see the difference? It is put within comma. Why? There is a reason. This clause is not giving us essential information. ये हमें important information नहीं दे रही है. Extra information but which is not important. If I remove this clause, the sentence will be John is happy. It's clear. It is making sense. लेकिन पहले एग्जाम्पल में अगर हम क्लॉज हटाते हैं तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. So on the basis of these two examples, let's have two kinds of relative clauses. They are defining or non-defining. So first, what is a defining relative clause? A defining relative clause gives essential information about a noun. The clause which gives us essential information, that is a defining relative clause. Without this information, we won't know who or what the sentence is talking about. इसके बिना हमें पता ही नहीं चलेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. Okay? It helps identify the person or thing we mean. See the example. The house which we purchased last week is not spacious. Again, this is a relative clause and it begins with which and it is giving us essential information about the house. अगर इसको हम remove करते हैं तो sentence would lose its meaning. Next is non-defining relative clause. It gives extra information, but it's not essential. Non-essential details. Extra non-essential details about a noun. And it is optional. Non-defining relative clause हमें important information नहीं देती है. हमें unimportant details बताती है. The sentence would still make sense without it. If we remove the clause, the sentence would still make sense. My phone which I lost was expensive. Which I lost? Whose car broke down? These two are non-defining relative clauses. एक तो they are between the commas. And if you remove them, the sentence would still make sense. My phone was expensive. My cousin is late. The meaning is clear. Okay? That's why it is called non-defining relative clause. Relative pronouns and adverbs, they play an important role in making a relative clause because relative clauses begin with either relative pronouns or relative adverbs. Defining relative clauses begin with who, whom, which, that, when, where, why. Non-defining relative clauses begin with who, which, whose, but not that. Now quick tips for using defining relative clauses. Never use commas. Very important. In defining clauses, you will never use commas.
बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज इसेंशियल। जो रिलेटिव क्लॉज हमें इंफॉर्मेशन दे रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कॉमास यूज़ नहीं करेंगे। द हाउस दैट आई लिव इज़ न्यू, क्योंकि हमने डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को कॉमा में लिखा है तो ये इनकरेक्ट हो गया। द हाउस दैट आई लिव इन इज़ न्यू, दिस इज़ करेक्ट वन, सो नो कॉमास यूज्ड। हु और विच की जगह आप दैट यूज़ कर सकते हैं, कब? इन स्पोकन इंग्लिश, इन इनफॉर्मल स्पीच। द कार दैट ही ड्राइव्स इज़ फास्ट, सो दैट ही ड्राइव्स हमारी रिलेटिव डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, एंड दिस इज़ एन इनफॉर्मल स्पीच और वी कैन यूज़ दैट इन स्पोकन इंग्लिश। द कार विच ही ड्राइव्स इज़ फास्ट, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में हम विच का यूज़ करते हैं, और स्पोकन इंग्लिश में हम हु और विच की जगह दैट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, omit the relative pronoun if it is not the subject but object of the clause। कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? लेट्स सी द एग्जाम्पल। द स्टोरी आई रेड वॉज बोरिंग, आई रेड इज रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। द लैपटॉप आई बॉट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, आई बॉट ऑल्सो defining relative clause. So these two are defining relative clauses, but where is the relative pronoun? हमने यहाँ पर relative pronoun यूज़ नहीं किया है, हमने उसको लीव आउट कर दिया है। which और that का यूज़ होना चाहिए था पर हमने उसको यूज़ नहीं किया है। क्यों? Because the story, the noun, that is the object. Similarly, laptop is the object of the verb bought. So when the relative pronoun is the object, then we can omit which or that. Okay? A defining relative clause must immediately follow the noun it describes. The teacher who teaches English is very strict. Who teaches English is placed after the noun teacher because it is describing the teacher. It is giving us more information about the teacher. So this is correct. The teacher is very strict. Who teaches English? यहाँ पर जो relative clause है वो strict के बाद लिखी है, ना कि teacher के बाद, तो ये incorrect है। So how can we use non-defining clause? What are the quick tips? Tip number 1, use commas. डिफाइनिंग में हमें कॉमास यूज़ नहीं करना है, लेकिन नॉन डिफाइनिंग में हमें कॉमास यूज़ करना है। क्यों? टू सेपरेट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको सेपरेट शो करने के लिए। सी द एग्जाम्पल, माई अंकल हु लिव्स इन डेली इज विजिटिंग सून। हु लिव्स इन डेली, दिस इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। माई अंकल हु लिव्स इन डेली इज विजिटिंग सून, this is incorrect. Why? Because who lives in Delhi is giving us additional information. अगर हम इसको हटा देते हैं तो मीनिंग क्लियर है, माई अंकल इज़ विजिटिंग सून, और इसमें कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिए, इसलिए ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। Okay, who lives in Delhi, because the relative clause is put within comma, so this is correct. But here relative non-defining relative clause is not put within comma, so this is incorrect. तो ये ध्यान रखिए, non-defining clauses में comma ज़रूर लगता है। नेक्स्ट टिप इज नो यूज ऑफ दैट। डिफाइनिंग क्लॉज में हम हु और विच की जगह दैट यूज कर सकते हैं, बट वी कांट यूज दैट इन नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस। वी मस्ट यूज हु और विच इंस्टेड ऑफ दैट। द बुक which I borrowed from my friend was amazing. This is correct because we have used here which और हमने इसको कॉमा भी रखा है, पर we can't say the book that I borrowed from my friend was amazing. This is incorrect. क्यों? क्योंकि हम that का यूज़ नहीं कर सकते नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में। नेक्स्ट टिप इज डोंट ओमिट द रिलेटिव प्रोनाउन इन नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस। डिफाइनिंग क्लॉजेस में हम प्रोनाउन ओमिट कर सकते हैं इफ द क्लॉज इज नॉट द सब्जेक्ट बट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। माई हाउस आई बॉट लास्ट वीक इज नियर द पार्क। I bought last week, this is a non-defining relative clause, and what I bought, my house। तो my house जो है उसमें आपने relative pronoun नहीं लगाया है और कॉमा यूज़ किया है, so this is incorrect। My house which I bought last week is near the park, and this is correct one। I have a pet, it loves to play with its toy। Which pet? Who loves to play या that loves to play with its toy। So we are talking about specific और important information. So कौन सी क्लॉज आप यूज़ करेंगे, डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग? द बॉय इज़ वेरी अपसेट, हिज बाइक वॉज स्टोलन लास्ट नाइट। विच बॉय? हुज
was stolen last night. So this is also specific. My sister lives in France. She is visiting India soon. My sister lives in France. She is visiting India soon. So you can choose defining or non-defining clause, whether the relative clause is specific, important or unimportant. इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए. Match your answers. I have a pet that loves to play with its toy. That is a defining clause, relative clause, that loves to play with the toy. So it is giving us essential information. The boy is very upset whose bike was stolen last night. Again, this is a defining relative clause which begins with whose, and it is giving us essential information. My sister who lives in France is visiting India soon, and this is a non-defining relative clause. So, because who lives in France is not an important information, if we remove it, the sentence would still make sense. So, keep learning, keep watching. I hope your doubts are clear.